ये स्टोरी ध्यान से सुनो। ये स्टोरी में लव है, रोमांस है, मिस्ट्री है और सबसे बड़ा ट्विस्ट है। बाकी का कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्विस्ट है। The thing is, there is a judge called Nagma Khan. She ordered the sub-inspector called Banwari Lal to go and search for a theft accused called Rajkumar. Very simple. Nagma Khan ने बनवारी लाल को बोला कि ये चोर को पकड़ के लेके आओ जिसका नाम राजकुमार है। बनवारी लाल जाता है राजकुमार के घर पे और वो ढूंढता है, उसको किधर भी नहीं मिलता है। He comes back to the court and he tells the court कि I searched everywhere but I could not find Nagma Khan anywhere. To which अबे नगमा खान तो मेरा नाम है, तेरे को तो राजकुमार को ढूंढने भेजा था। This is the bizarre thing. The sub-inspector of police of Firozabad in Uttar Pradesh mixed up the names of the accused and of the judge, and instead of searching for the criminal, went on a hunt for the judge. ऐसा देखा है क्या कभी कि कोई पुलिस वाला चोर को ढूंढने के जगह पे जज को ढूंढने निकलता है, चोर के घर पे जाता है और बोलता है जज नहीं मिल रहा है, और फिर जज को जाके बोलता है कि चोर के घर पे जज नहीं मिला। In another case, a man named Gaurav Singh Chauhan from Uttar Pradesh went on to Taj Mahal with some Ganga Jal and sprinkled Ganga Jal on the Mughals' grave. He claimed that it is not Taj Mahal, it is Tejo Mahalya, a Shiv Mandir which was destroyed by the Mughals and then converted into what is known as Taj Mahal. ये आदमी को ताज महल में तेजो महालय नाम का एक मंदिर दिखता है। मंदिर जो कि हर हर महादेव शिव जी महाराज का मंदिर था। सभी हिंदू भाई एकता बनाओ और आवाज उठाओ। ये बहुत अच्छा लेवल का ब्रेन वॉशिंग है कि मंदिर छोड़ के बाकी सब जगह पे मंदिर ही मंदिर दिखते हैं। इन द थर्ड केस, a self-styled 28-year-old godman claimed to lay the foundation for a Hindu village, aiming approximately 1,000 devout Hindu families would be based over here. According to some reports, the Hindu village would be ready in 2 years. In this Hindu village, no Christian, no Muslim, no Sikh, no non-Hindu would be allowed. This self-styled godman or Baba Virendra Shastri said that before creating a Hindu Rashtra, a Hindu nation, a Hindu village is supposed to be created. The task of making a devout Hindu in every home and every village will begin. This campaign will start this month and for that there are teams that are dispatched. दुनिया AI के आगे पहुंच गया है और ये लोग अभी भी हिंदू विलेज, ये विलेज, वो विलेज क्या चल रहा है। To which a BJP MP Manoj Tiwari, you must be knowing him for this. ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही हंस दिल Said that the Baba does not just want to create a village. He aims to transform the entire country into a land of truth and Sanatan values. Bageshwar Dham is not just a village, it is an entire city, he further added. This man who's creating a Hindu village also received the Prime Minister, has contacts with top ministers who keep visiting his ashram. How can the Indian government even allow something of this sort to happen? आज ये हिंदू विलेज बना रहा है, कल कोई क्रिश्चियन विलेज बनाएगा, फिर कोई मुस्लिम विलेज बनाएगा, some पारसी विलेज, some Jewish village, some this village, some that village, ये कितना विलेज बनाएंगे? यही करते रहना ये देश में। When everyone is making business out of religion, why should he be behind? In case if you're not able to reach the Ganga river to clear your sins, this man has a solution for you. You have to send a picture to him on WhatsApp. He will take a printout of it and he will dip it in the Ganga river for you. उससे तुम्हारा डिजिटल स्नान हो जाएगा और सारे पाप धुल जाएंगे। You are ready to commit more sins. मतलब during Kumbh Mela, he used to charge 1,100 rupees per person per snan. In some other news, the pastor Bajinder Singh was given life imprisonment. पूरा जिंदगी अभी जेल में निकालना पड़ेगा for a 2018 rape case. In her complaint, the woman alleged that Bajinder Singh, on the pretext of helping her in moving and settling abroad, lured her to his residence in Mohali Sector 63, where he raped her and also recorded the act. She further alleged that he threatened to post this video on social media if she did not agree to his demands. During the court proceedings, Bajinder pleaded for mercy, stating that he has a rod in his leg which makes it difficult for him to walk. Difficult for him to walk. Check कर. Wow, amazing miracle. Wheelchair patient is healed. Wow, amazing feeling. 5 years of wheelchair problem completely healed by the prayers of Prophet Bajinder Singh Ji. But if he can cure someone else, can he not cure himself? He also stated that he has 3 children and his wife suffered from a medical condition. Again the same question. गोपाल Why is he able to cure someone else but not his own wife? The court, however, observed that Bajinder was having dominance over the woman and by misusing his position as a preacher, he committed heinous offences. This preacher, Bajinder Singh, runs 2 churches. He is a Jat from Haryana who later converted to Christianity and became a preacher in 2012. Just 12-13 साल पुराना बाबा है। क्या नया है वहाँ? In the last news, 2 influencers, Dr. Medusa and Neha Rathod, were booked on sedition charges for their post on Pahalgam.
Actually, their post was not on Pahalgam. Their post was on government security labs. सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का इंस्पिरेशन ये लोग को यहाँ से मिला रहेगा। जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहाँ से आता? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। Another problem that the complainants had is that her videos were being shared by Pakistani handles, and my legal team, which consists of I, me, myself, tells me that I cannot show this clip. ये zoom कर मैं नहीं दिखा सकता हूँ। देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? So it's okay, I will not show. दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। I cannot show it to you. I cannot show it to you. इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? No, please don't request me. I cannot show it to you. भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी।